So last year मैं तुम्हारे जूतों में था. I was in your shoes. More like I was also there applying for the EA, ED या REA in the US universities, and I wish मुझे कोई guide करता with the things, because applying early can actually be your golden ticket. Here's how to pick, or here's how to pick without crying later. The first thing is that you need to understand कि what is EA, what is ED, or what is REA complete. So with the basic definitions, EA मतलब early action, ED मतलब early decision, and REA मतलब restrictive early action. So तीनों में फर्क है, and बहुत बड़ा फर्क है जो तुम्हें जानना चाहिए. EA मतलब it's non binding, मतलब you apply to a EA, you are applying early. What does that mean is कि you are applying before the other. A lot of competition तुम्हारा reduce हो जाता है if you are applying for the EA in a particular college. अब ये चीजें ना like college पे depend करती हैं कि what would they offer. Are they offering ED, are they offering REA, or are they offering EA? It's not up to you कि मैं हार्वर्ड में ED करूंगा. अरे हार्वर्ड में ED होता ही नहीं है यार, हार्वर्ड में REA होता है, right? So it's like that. ED मतलब it's a binding offer, मतलब अगर तुम accept हो गए, it's not up to you to reject their offer. That is something. In EA what happens is you can reject the offer, it's up to you. So that is the freedom you can get. In REA this is what all the big. So basically in REA what happens is you can apply to Harvard, but other than that you can only and only apply to public universities, not private university. That is what they are trying to say. That's the basic difference. अब ये पूरा डिपेंड करता है कि कॉलेज क्या ऑफर करती है. From my perspective, मैंने when I used to when I applied in like 7 universities with 1 ED and all the 6 EAs. ठीक है, मेरा EFC कम था. The thing I want to emphasize guys is कि पहले अप्लाई करने से ना बहुत चीजें होती है. पहली बात ये है कि कंपटीशन कम होता है, ठीक है. I actually got accepted in like one of them, ठीक है. एक में वेट लिस्टेड हो गया था, मैं रीड कॉलेज में वेट लिस्टेड हो गया था. एंड दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है कि if you're applying early, obviously there is going to be more scholars, right, available to them to offer you. So if you are someone with a high need and you know कि तुम्हारा प्रोफाइल उतना भी अच्छा नहीं है कि जैसे ओलंपियड आ गया या रिसर्च पेपर्स एंड ऑल दैट, trust me, ये is like your best hope there is. ठीक है, applying early is the best hope you can have right now at the moment. ठीक है, so इसको भाड़ में मत जाने दो. That's what I would say. ठीक है. अब देखो फाइनेंशियल माइंडसेट जो होता है हम इंडियंस का कि लाइक ईडी रिस्क है, सो कैसे नीड मेट क्लीन. ईडी में अगर तुम अप्लाई कर रहे हो एंड दे टेक यू इन, यू आर अप्लाइंग फॉर राइट कॉलेज. देयर आर कॉलेजेस व्हिच हैव द थिंग्स लाइक we are going to meet 100% of the demonstrated need for the admitted students. Then you should apply to those colleges in the ED. Why I'm saying that कि अगर तुम applicate हो गए and if they see that you have a strong need to be met, then definitely they are going to cover up for every single thing. That's at least like इतना तक हो ही जाता है, ठीक है. So because like there are some of my friends who are getting into like colleges like who had applied like this, ठीक है, and उनका literally EFC is somewhere around 10-11, ठीक है, and that's crazy. That's simply crazy. ठीक है, उनका EFC was around 5K that they voted, getting the acceptance letter. Their EFC is just like that. And मेरे तो दिमाग से उठ गया यार, लेकिन वाओ, बिकॉज मैंने सबसे बड़ी गलती की थी EA में कि मैंने EFC अपना 0 डाल दिया था, ठीक है. सो आई एम लाइक ठीक है क्या होगा, फुली मिलेगा, बट आई वाज लिविंग इन अ ड्रीम. आई वाज लाइक दैट, ठीक है. एंड उसके बाद मुझे CSA प्रोफाइल फिर से बनाना पड़ा फॉर अप्लाइंग इन द RD. स्टिल वेल नहीं हुआ मेरा ऑब्वियसली बिकॉज माय EFC वाज एक्चुअली लो कंपेयर्ड टू व्हाट RD में होना चाहिए, बट दैट इज व्हाट द रियलिटी इज, ठीक है. सो इफ यू आर अप्लाइंग इन EA, as much possible apply करो, because competition कम होता है, scholarship ज़्यादा रहती है, and trust me that's the best shot you have at getting into USA and all. So application deadlines for EA are generally around November 1st, ठीक है. And उससे पहले I think you should get every single thing done, ठीक है. And you can always pick कि like मैं ED में apply कर रहा हूँ, like EA में you can always pick कि like are you applying for EA or applying to regular, and like that's the thing, ठीक है. Decisions coming by December, ठीक है. So उसमें पता चल ही जाता है कि क्या क्या होता है. MIT में you can always apply for EA. मैंने भी किया था, मैं रिजेक्ट हो गया. My ED1 was कोलंबिया. मैं बहुत एक्सपेक्टेशन रख रहा था कि यहाँ कोलंबिया में हो जाए, कोलंबिया में, बट डेल टू दिया नहीं हुआ मेरा कोलंबिया में भी. So that is something, and that's the reality guys कि like कभी कभी होता है चीजें, कभी कभी नहीं होती, but in the end I always say कि like if you're applying to US as an Indian student, ठीक है, then always keep backups. Always, like either in Europe, either. So I hope ये पसंद आया होगा, and if you have any doubts, let me know in the comments. ठीक है, चलो. And अभी के लिए अलविदा, bye bye. And by the way, if you want to join AVF, link is right this one. It's also in the description, so you can check. Bye bye.